Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine and enjoying your winter vacation. My name is Miss Sana Zahoor. I'm your kindergarten teacher. आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि आज हम बुक से कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम करेंगे बहुत सारी मजे की एक्टिविटी। जी, तो हमारी एक्टिविटी में है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। लेसन के एंड पे आप जाएंगे बाहर और ऑब्जर्व करेंगे नेचर को। जी, स्काई को देखेंगे जो कि सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर, और ब्लू कलर का। उसके बाद आप करेंगे ऑब्जर्व ग्रास को, जो कि सॉइल और स्काई के दरमियान में है और ग्रीन कलर का है। इसके बाद आपके घर में कोई तो प्लांट होगा, आप मामा से कहकर उसकी रूट्स देखें जो कि सॉइल के नीचे है। एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन का हमारी स्टडी से क्या ताल्लुक है? हम अपनी इंग्लिश की नोटबुक पर देखते हैं 4 लाइन्स। तो हमने ऑब्जर्व किया स्काई को, जो कि सबसे टॉप पर है, तो हम इस टॉप लाइन को कहते हैं स्काई लाइन। उसके बाद मिडल में हमने ग्रास को देखा जो कि सॉइल से ऊपर है, तो हम इन 2 लाइन्स को ग्रास लाइन कहते हैं। In a easy way, we will say it grass line 1, grass line 2. Similarly, soil के नीचे होती हैं roots, तो हम उसको रिलेट करते हैं रूट लाइन से, क्योंकि वो भी सबसे नीचे होती है। तो देखा कितना मजा आ रहा है कि आपने जो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल आपकी नोटबुक की लाइन से मैच हो। स्काई लाइन एंड द 2 मिडल लाइंस आर इक्वल टू ग्रास, तो हम उसको बोलेंगे ग्रास लाइंस। और सबसे नीचे वाली लाइन जो नीचे है, जैसे कि रूट्स होती है सॉइल के नीचे, तो हम इसको बोलेंगे रूट लाइन। ये आपकी नोटबुक की लाइंस है। ये तो आप सबको पता है कि टॉप लाइन को आप स्काई लाइन कहते हैं। तो बताएं which are grass lines? Yeah, you are right. These are grass lines. These are grass lines. And now tell me which is root line? It is the line which is under the grass line. Yeah, you have guessed it right. This is the root line. Very good. Well done, my child. Now tell me again, where are the grass lines? Yeah, well done. आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। Now tell me, where is the root line? Is this the root line? You are saying no. Okay, then where is the root line? Yeah, well done. Clapping for all of you. Very good. Teacher is very happy from you. Good. These are the letters that you already have learned. और इनकी आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी कुछ इस तरह नोटबुक पर की है। These are the letters written on the notebook. अब हम इनको डिफरेंटली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ए को। आप देख रहे हैं ये इन बिटवीन 2 ग्रास लाइंस है, तो हम इसको कहेंगे ग्रास लेटर।
अब जितने भी लेटर्स क्रॉस लाइन के इन बिटवीन होंगे हम उनको क्रॉस लेटर्स कहेंगे, जो कि क्रॉस लाइन 1 को टच करेंगे और उनका एंड जो होगा वो क्रॉस लाइन 2 को टच करेगा। लेट्स सी कि कौन कौन से क्रॉस लेटर्स क्रॉस लाइन 1 से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे क्रॉस लाइन 2 पर। ना तो क्रॉस लाइन से ऊपर जाएंगे और ना ही उससे नीचे होंगे, इन दोनों लाइंस को टच करेंगे, जैसे कि ए, ख। देखिए ख ऊपर से भी टच कर रहा है और नीचे से भी। आ, इ, म, न, आ, ल, स। आप मुझे बताएं क्या ठ क्रॉस लेटर है? नो, यस यू आर राइट, नहीं है। क्या ये है क्रॉस लेटर? यस, गुड। वक्स। वेल डन। मेरे साथ क्रॉस लेटर्स को लाउडली कहें। A, K, A, I, M, N, A, R, S, A, V, V, रूट लेटर्स वो लेटर्स होंगे जो क्रॉस लाइन से तो स्टार्ट हो जाएंगे, क्रॉस लाइन 1 से, लेकिन एंड वो रूट लाइन पे है। एंड करें कौन सा लेटर है जो क्रॉस लाइन से तो शुरू हो रहा है और एंड रूट लाइन पे हो रहा है? ए है? नो। ब, नो। ग, यस, गुड। ज, यस, और ढूंढे कौन सा है? फ, good. Q, well done. Or only one is left. J, yeah, well done. Very nice. Now repeat the root letters behind me. Say G. G is the root letter because it touched the root line. J. J is the root letter because it touched the root line. P, K, J. Now you have learned about the root letters. We have a very good activity for you. What you have to do, you have to identify and circle the cross letters with green color pencil. Grass green होता है ना, तो हम उसको ग्रीन कलर पेंसिल से क्रॉस लेटर्स को सर्कल करेंगे। ए, ख, ए, I, M, N, A, R, S, A, V, Wax. Good! You make me so much happy. Now identify and circle the root letters with brown color pencil. Roots brown होती हैं और हम उसको सर्कल करेंगे ब्राउन कलर पेंसिल से। Let's start. We have 5 circles here. What you have to do, you have to put these 5 circles around the letters who touch the root line. Yeah. Go ahead. Where is it? Here it is. G. Well done. J. J is a root letter. P. P is a root letter. Well done. Qua. Yes, qua is a root letter. Now only one circle is left. Guess it. T. No. Y. Well done. Teacher is so happy from you. Now it's time to do the notebook work. Mama will prepare the notebook for you. You will write. Now take the green color pencil and circle the cross letters. Yes, teacher is doing for you. A is a cross letter.
K is a grass letter. F is a grass letter. And tell me, which one is the next grass letter? G? No. H? No. E. Yes, it's the grass letter. Here is the grass letter. Yes. Speak loudly. I'm listening you. Oh. And here is the next grass letter. R. All of these letters are touching the grass lines. V. Good. Now you will circle the root letters with brown color pencil. Root letters are those which touch the root line. Yes, you are right. It is G. And yes, tell J. Good. Yes, P is touching the root line. P. J. Activity time! Dear students, write any 5 grass letters in the grass and color the grass. Make sure your pencils are sharp. And your next activity is find the root letters from the letters given and match the root letters with the root. I hope you will enjoy. Homework time. Write alphabets A to Z. Circle grass letters with green color pencil and root letters with brown color pencil. Send pictures of work to your teacher. Allah Hafiz. Take care. Teacher really miss you.